हम बात करने वाले हैं वो है हैशिंग के बारे में। हैशिंग के अगर हम बात करें कि यार हैशिंग क्या होता है, हैशिंग एक प्री स्टोर्ड हमारा एक तरीका है जिससे हम प्री स्टोरेज कर सकते हैं अपनी जो है किसी भी चीज़ का हम स्टोरेज में हम जो है यूज़फुल कर सकते हैं हैशिंग को। ठीक है, जब हमें फ्रिक्वेंसीज निकालनी होती है, जब हमें नंबर को स्टोर करना होता है और फैच करना होता है, उस समय हम हैशिंग का यूज़ करते हैं। ये एक मेथड है, एक फिनोमिना है। जैसे एक एरे हमने दिया है 1 2 1 3 3 2। अगर हम 1 की बात करें, 1 कितनी बार ऑकर कर रहा है इसमें, 2 बार। 2 की बात करें तो 2 भी 2 बार कर रहा है, और 3 की बात करें तो 1 बार कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी और डिजिट की बात करें लाइक 5 की, 6 की, 10 की, 11 की, सो ऑन, तो वो जो है 0 बार ऑकर कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि भाई हैशिंग में अब अगर हम इसे नॉर्मल देखें तो क्या हम नॉर्मली इसे कैसे कर सकते हैं, इफ़ वी थिंक अबाउट नॉर्मल कि हाउ वी कैन डू दिस थिंग विद अवर नॉर्मल बेसिक टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज़ अ नंबर, हमें एक नंबर लेना पड़ेगा और उस नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू iterate all the array and count its frequency one by one. Like consider number 1 and we have making a function of something like there is a whole array can be traversed, and if the array I is equals to number, then we can say that we can got it and our count is going to update, and then we return its frequency. So in that case, if we have considered that there is a q queries of frequency, like we have to search for a q queries, then there is n times, for q queries there is n times looping. So their overall frequency is going to q into n, and in worst case is n into n, matlab n square complexity is going to be. So like this I show you a pseudo code how we can do it in a basic terminology, in a basic brute force approach. Okay, I think you have you understand this. Now after this I have to think about ki how can we do this one by one. Like there is, as you see, this is our basic dry run of the whole array, but how can we do this in basically we can do one by one. Okay, all the things I already explained to you, and in this pseudocode I have to show you how this can going to happens. Okay guys, I hope you understand it. Now the basic thing is about hashing. Hashing we have used a STL. It's a STL method as array is used as a vector. Similarly for hashing we used as a map or unordered map. Now what is the difference? In Java we use hash map, but what is the difference between map and unordered map? Map is gives us a thing in a sorted order, whereas unordered map is not give us thing in sorted order. ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स अबाउट मैप एंड अनऑर्डर्ड मैप वी हैव गोइंग टू डू इन फर्दर lectures, but before going to do that I have similarly basically how it can stored in similar way. It can store both in a similar way, like key and value pairs they can store. Like there is a particular key is called a number and a value is called a frequency here, and we have making any type of map like character map, number map, any type of map we can make, and by this we can ease our work. Like for array there is around our maximum size of array implementation is 10 to the power 7, but if there is a question of 10 to the power 9 size array, then what can we do? At that time map is useful, so we can store it in a key value pairs, and by this way we can easily do the things. And basically if we talk